करेंगे and discuss what is tomato flu, what are the symptoms and signs. On the very onset, I would like to tell you that tomato flu, tomato खाने से नहीं होता. So before we get into the prayer, I just wanted to put that out there. Without much ado, I would request Anita Shahji to please come forward and conduct the morning prayer. थैंक यू डॉक्टर मीनाक्षी. आज बुधवार 25 मई 2022. सर्वप्रथम हमारे स्वास्थ्य गुरु स्वर्गीय डॉक्टर के अग्रवाल को नमन व HCFI परिवार को सादर प्रणाम. आज की प्रार्थना प्रभु से. हे प्रभु, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो. हे प्रभु, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो. असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतमगमय. सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु. लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु. ओम शांति शांति शांति. Over to Dr. Meenakshi. Thank you, Anita ji, for that Shanti prayer this morning. Let's begin our topic and discuss about tomato flu. Again, मैं repeat करना चाहूँगी, tomato flu, tomatoes खाने से, टमाटर खाने से नहीं होता. So, that is not something that you need to avoid at the moment. इसके अलावा ये भी बताना चाहूँगी कि tomato flu जो है, it is not resulting in a very serious disease. So the question of to panic or not to panic, you should not be panicking at all. All you have to do is just be a little alert. इसके बारे में बहुत ज़्यादा हमें अभी तक नहीं पता है. So I'll quickly skim through everything. So tomato flu, इसका नाम tomato flu क्यों पड़ा है? It's because जो इसमें rashes होते हैं and the rashes की जो size है वो थोड़ी बड़ी है as compared to maybe a tomato. So of course टमाटर हमारा इतना बड़ा होता है, इतनी बड़ी बड़ी rashes नहीं हो रही हैं. But you can see इस हाथ में आप देखिए जो rashes का size है, it is relatively larger than what हम usually हमें rashes होते हैं. Usually जो rashes होते हैं pin point rashes होते हैं, but यहाँ rashes का size जो है ये थोड़ा सा बड़ा है. If you just follow my pen, the sizes are slightly bigger than what we usually see in viral exanthema. So इसीलिए इसका नाम जो है tomato flu पड़ा है. टमेटो खाने से नहीं होता and टमाटर जितने इतने बड़े बड़े तो rashes नहीं हो रहे, but yes, the sizes are bigger. So केरला में सबसे पहले देखा गया है there are roughly around 80 cases in Kerala so far. इसके अलावा उड़ीसा में भी 26 केसेस देखे गए हैं. तो ऐसा नहीं है कि नहीं फैल रहा, बट यूजुअली जब भी हम इस तरह का एक आउटब्रेक देखते हैं बहुत जल्दी सेटल हो जाता है. वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग इट टू कवर द लेंथ एंड ब्रेथ of the country, but still everyone has to be alert about the symptoms so that they can give the children adequate treatment on a on a timely basis. So it is a viral disease which causes blisters that resembles tomatoes. इसीलिए इसका नाम tomato flu पड़ा है. टमाटर खाने से नहीं होता. So no worries about tomatoes, only the description of the rashes, उसके वजह से इसका नाम tomato flu पड़ा है. So it usually it does not affect the elders, it affects the children below 5 years of age. 5 साल से कम उम्र वाले बच्चे जो हैं उनको ये हो रहा है जब इनको अनडायग्नोस्ड फीवर है along with large rashes. That is when you suspect tomato flu. So that is about the description of the people who are getting it. It's only the children below 5 years of age that need to be worried.
ब्लिस्टर्स एंड रैशेस हो रहे हैं इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. इट्स नॉट लाइक खाली हैंड्स में या ट्रंक या एब्डोमेन में लिमिटेड है. इट इज सेवरल पार्ट्स ऑफ द बॉडी कैन बी अफेक्टेड विद द रैश. स्किन इरिटेशन हो सकती है. Dehydration, any viral fever will cause dehydration, and this is something that you need to be careful about. And this is the only treatment that you need to be worried about as a family member कि आपको dehydration नहीं होने देना. आपको in adequate amount of liquids देना है इनको. ज़्यादा caffeinated drinks ना दें because that causes dehydration in itself. So नॉर्मल प्लेन वाटर इज गुड इनफ. आप इसके साथ में कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स अगर देना चाहें, अगर आपको लग रहा है डिहाइड्रेशन हो रहा है, यू कैन इवन सप्लीमेंट विद इलेक्ट्रोलाइट्स. इट्स बिलो 5 years of age, so yes, below 6 months अगर किसी को हो रहा है तो ब्रेस्ट फीडिंग ओनली, नो अदर वाटर एंड no other liquids to be given for children below 6 months of age. But इस एज ग्रुप में इतना ज्यादा देखा भी नहीं जा रहा. So yes, this is the description of why it is being called the tomato flu. The जो इसका जो causative agent है, it is a virus most likely, and because इसका जो etiology है वो most likely dengue fever या chikungunya से resemble करेगा. So that is again something that you need to be worried about. सिम्टम्स क्या हैं? प्राइमरी सिम्टम्स है कि बड़ी ब्लिस्टर्स हो रहे हैं यहाँ पे. everywhere you see that, you will see that they are the size of large tomatoes, but tomato usually it is this big, so it's not going to be that big, but yes, they are bigger than the usual rashes हो रही है, skin irritation हो रही है, high fever हो रहा है, dehydration हो रही है, body aches and joint swelling. So you have to know that all these are symptoms of a viral exanthema. मतलब कि एक viral जो rashes वाली जो fever है, वैसी ये सारे इसमें होते हैं. So because it is like a viral fever, you will also see fatigue, you will see malaise, you might see some discoloration of hands and knees, and buttocks जो जहाँ पे weight bearing areas हैं वहाँ पे आप इसमें ये discoloration देख सकते हैं. Vomiting हो सकता है, abdominal cramps हो सकते हैं, coughing, sneezing and runny nose can also be there. So but the primary symptoms that you cannot miss are the large tomato like rashes. So इसका ध्यान रखें. क्या ये contagious है? क्या ये एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैल सकता है? And the answer is yes. Viral exanthemas are usually contagious, and so is tomato flu. एक बच्चे से दूसरे बच्चे को हो सकता है. किसी बच्चे को अगर इन्फेक्शन है तो इस बच्चे को दूसरे बच्चों से दूर रखें. So there is no, मैंने शुरू में ही बोल दिया था, there is no need to worry, there is no need to panic. ना तो ये जानलेवा है और ये आसानी से ट्रीट हो सकता है. ट्रीटमेंट इसका कुछ भी नहीं है. You just have to follow the symptoms and you have to give you have to pretty much give the symptomatic treatment. जो भी परेशानी हो रही है उसके लिए हम एक ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं. But the most important treatment is hydration. पानी जो है इनको सही मात्रा में आपको देनी है. तो क्या करना है आपको? You have to contact the doctor immediately. Maintain proper hygiene for this patient, because जब भी viral disease कोई आपको होती है, your immunity is lowered and you may your immunity is lowered and you are आपको दूसरी कोई इन्फेक्शन होने की संभावना जो है वो थोड़ी बढ़ जाती है. So maintain good hygiene. Do not let your child scratch the blisters. जहाँ rashes हैं उसमें खारिश नहीं करनी, उसको खरोंचना नहीं है, otherwise it will cause problems. पानी खूब पिलाइए. गर्म पानी आप यूज कर सकते हैं to bathe the child. जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उससे दूसरे लोगों को कांटेक्ट में ज्यादा नहीं आना है. क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, बर्तन और कपड़े जो हैं इनको धोना है, सैनिटाइज करना है to prevent the flu from spreading further. That's all pretty much that you need to know. There is no specific treatment. Usually viral fevers के लिए एक specific treatment हम नहीं देते हैं. So
again, the disease in itself is not something that is very serious. So इस बात का ध्यान रखें. That is why a specific treatment will not even come up. um, uh, just water and symptomatic treatment is enough. Paracetamol for fever. अगर कुछ rashes हैं उनके लिए हम antihistamines भी दे सकते हैं. And if there are any other symptoms, then we'll treat the symptoms. So that's about it. So क्या COVID-19 से कोई relation है? That is an important question, and the answer is no. Only the symptoms might be a little similar, but there is no connection with COVID-19 as such. Viral fever hai, and that is pretty much the similarity that there might be. So that's all from us. About tomato flu. I want to keep this short and sweet. I don't think there are any questions yet. So we'll be back tomorrow with another show. Until